Assalamu alaikum students, welcome to Tutors Time. My name is Akif Nawaz Khan and we'll be talking about one of the most important topics of English grammar, that is different cases of noun. So basically we have four types of nouns. The first one is nominative, then we have accusative, and after that we have genitive, and the last one is dative. So these are the different cases of a noun which we come across in different sentences. So let's start from the very first one, and that is nominative case. So a nominative case is also called as a subjective case. So what is basically a nominative case or a subjective case? So if we define it in a very simple and short terms, so when a noun or a pronoun comes in the position of a subject in a sentence. So that is what we call as a nominative case or a subjective case. Now, for example, if I say that Ali rides a bike. So if you look at this sentence, there are two nouns. The first one is Ali and the second one is bike, but the positions of both of these nouns are different. The first noun appears at the position of a subject, whereas the second one appears at the position of an object. So, but we're not concerned with the noun that appears or that comes at the position of an object. So basically, if we say that the nominative case, when a noun or a pronoun comes at a position of a subject, so that is what we call as a subjective case और a nominative case. अब अगर हम उर्दू में इसको सिंपली डिफाइन करें तो वो नाउन और प्रोनाउन जो कि हमारे पास सब्जेक्ट की पोजीशन पर आते हैं इन अ सेंटेंस, वी कॉल इट अ नॉमिनेटिव केस, और इसी वजह से इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स टर्न आवर हेड्स टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ different cases of noun. So the second one is accusative case. The second one is accusative case. So that is our second one, एक्यूजेटिव केस. अब अगर हम इनको कंपेयर करें, जिस तरह हमने नॉमिनेटिव केस के लिए दूसरा नाम भी तजवीज़ किया था जो कि था सब्जेक्टिव केस, तो इसी तरह हम एक्यूजेटिव केस को वी कॉल इट एन ऑब्जेक्टिव केस, एन ऑब्जेक्टिव case. Now from the term it is quite clear that a noun or a pronoun will come on the position of an object. अब अगर मैं if I write the same example down that Ali rides a bike. Now I have written down the same example as it was there in the nominative case or a subjective case. So यहाँ पर अब देखें, Ali is a noun and it comes at the position of a subject. अब अगर हम यहाँ पर देखें, bike is again a noun and it appears at the position of an object. So हमने define किया था कि ऐसा noun और pronoun जो कि objective की जगह पर हमारे पास आ जाए, we call it an accusative case or an objective case. So simply अगर मैं इसकी definition लिखूँ, so when a noun or a pronoun comes at the position of
an object in a sentence, we call it accusative case और ऑब्जेक्टिव केस. सो अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर ले, सब्जेक्टिव केस को और ऑब्जेक्टिव केस को, तो आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन जब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए वी कॉल इट सब्जेक्टिव केस, और जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आए सो वी कॉल इट objective case. So I hope it will be quite clear to you now. Now let's turn our heads towards the third one, and that is possessive case or genitive case. अच्छा, सो जो थर्ड वन हमारे पास है वो है possessive case, जिसको हम कहते हैं जेनेटिव केस भी उसको कहा जाता है. अच्छा, अब जिस तरह हमने कहा था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो केसेस है वो ऑलरेडी डिफाइन है जब हम उनके टॉपिक्स या टाइटल को देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस. सो सेम इज द केस विद द पोजेसिव केस. अगर आप देखिए, सो पोजेसिव इट शोज पोजेशन, मीन्स ओनरशिप. सो सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हेन अ नाउन or a pronoun shows possession in a sentence. अच्छा, ऐसे नाउन और प्रोनाउन जो हमारे पास पोजेशंस को शो करते हैं, ख्वाह वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर हो या ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर हो. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अहमद cat is very cute. So अब यहां पर आप देख लें, I have used and I have shown this possession at the position of subject. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाउन या जहाँ पर जो नाउन यूज हुआ है इट शोज पोजेशन. सो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज द पोजेसिव केस, और इसको हम साथ में जेनेटिव केस भी कहते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारे पास पोजेशन शो हुआ है ये सब्जेक्ट की जगह पर हो, इट कैन बी एट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज वेल. अच्छा, सो द फोर्थ वन इज, जो फोर्थ वन हमारे पास है, इट इज समहाउ रिलेटेबल to accusative case, but there is slightly difference in both of these cases. So the last one जो हमारे पास है वो है dative case. dative case को आपने याद रखना होगा कि it comes at the position of an indirect object. जब हमारे पास नाउन और प्रोनाउन यूज हो in a sentence at the position of an indirect object or it works as an indirect object, तो उसको हम कहते हैं dative case. और जब हम डायरेक्ट, अगर मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, so it would be like this. For example, he gave me a book. अब इस सेंटेंस से देखिए डेटिव केस तो हम समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि जो हमने पढ़े हैं नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस और साथ में डेटिव केस, ये एक सिंपल एग्जांपल्स है, हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश आराम से कर सकते हैं. सो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू डिवाइड द एंटायर सेंटेंस इनटू इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरीज. ग्रामेटिकल कैटेगरीज मींस कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कि प्रोनाउन कौन सा है, इसमें नाउन कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. सो द फर्स्ट थिंग इज we have he as a pronoun, gave is a verb, me is again a pronoun, a is a preposition, फिर इस book is a noun. अब यहाँ पर देखिए, हम जब केसेस स्टार्ट किए थे तो हमने कहा था कि हम प्रोनाउंस के साथ लिंक डील करेंगे और साथ में नाउन्स के साथ. सो यहाँ पर हमारे पास इस सेंटेंस में एक नाउन है और दो हमारे पास प्रोनाउन है.
बट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को स्टडी को बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम फोकस करते हैं डेटिव केस पे। तो यहाँ पर अब देखिए हमारे पास जो है ही इज द सब्जेक्ट, a book is again this is again an object and book is also an object, बट इसमें हम अब डिफर करेंगे कि मी जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है और बुक जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। सो जो हमारे पास बुक है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वेयर एज जो मी है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा कि इसमें से डेटिव केस कौन सा है, कौन सा ऐसा नाउन या प्रो नाउन है जो कि यूज हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। तो अब आपको यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि मी इज यूज्ड एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द डेटिव केस ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट भी हमारे पास यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज सब्जेक्टिव केस, दिस इज सब्जेक्टिव केस, और साथ ही साथ हम इसको दूसरा नाम देते हैं नॉमिनेटिव केस का। और अगर हम दूसरी तरफ दूसरे एंड पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास बुक यूज हुआ है एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमने कहा था कि जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो वी कॉल इट एक्यूजेटिव केस, और इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। ओके, सो इफ आई हैव टू समराइज द एंटायर लेक्चर in few simple sentences, so it would be like this, that there are four different there are four different cases of noun. So first of all, we have a subjective case in which when a noun or a pronoun is used at the position of a subject in a sentence, we call it a subjective case. Acha, the second one is objective case. When a noun or a pronoun is used here in the sentence at the position of an object, we call it accusative case or objective case. Okay, so the next one is when a noun or pronoun is used at the position of an indirect object या indirect object की तरह वो act करे sentence में, we call it dative case. We call it dative case, and dative case is interlinked with indirect object. And the last one is possessive case, जिसको हम already कहते हैं genitive case as well, in which there is shown possession, like there is the role of apostrophe s, and apostrophe s shows possession. So whenever in a sentence there is shown apostrophe s either with the subject or with the object, so we call it a possessive case or genitive case. So I hope कि आपको समझ आ गई होगी, और that's all for today. I'll call it a day for this topic. And if you want me to discuss any other topic related to grammar or related to English, just write down in the comment box and we'll try to make that our priority. So that's all. Have a good day. Allah Hafiz. Thank you.